Okay, good evening, all of you. And today it's a very interesting and useful lecture, especially effective for both JEE Mains and Advanced, which is the recent trends as you have seen in the first session of Mains as well. And especially the major emphasis of this will be given on JEE Advanced. So I'm coming with the recent trend of the problem, which is counting number of functions. So before I go further, I'll try to cover most of the cases. And let's start with the simplest one. Let's say we have a set A and there is set B. Set A contains 4 elements and set B contains 3 elements. Consider a function which operates from set A to set B. Of course, those elements can be given name like 1, 2, 3, 4 or A, B, C, D. Right? So the first part of the question is how many functions are there from set A to set B. Okay, so the first part of the question is how many relations are there from set A to set B. Now what is the difference between relation and function? You know, relation, any relation R is a subset of Cartesian product A cross B. So if set A has 4 elements, let's give the name A, B, C, D, and to set B we can give 1, 2, 3. Right. So Cartesian product A cross B, which is basically A, B, C, D cross 1, 2, 3, will have totally 12 elements. So those elements itself will be ordered pair A, 1, A, 2, A, 3, so on and so forth, D, 1, D, 2, D, 3. Okay, so these 12 elements. Now, relations is a subset of Cartesian product. So in any of this subset of A cross B, either I can choose an element or not choose it. So either A, 1 will be present in the Cartesian product in the subset, or it will not be present. For example, A, 1 is one of the relation where simply A is going to 1. We can have other relation also where maybe A is going to 1, A is going to 2 and A is going to 3. This is clearly a relation but not a function because at one input you can't have multiple output. हिंदी में हम बोलते हैं एक तीर से आप मल्टीपल निशाना नहीं मार सकते हो, ठीक है, एक तीर एक को उड़ाएगा. हाँ, 2 तीर से एक निशाना जरूर मार सकते हैं. So in that sense, of course, that is also a relation, and a special kind of relation where corresponding to every input we have a unique output in the output set and no input will have multiple output. Okay, and every input in the input set must be exhausted. So वो जो 2 fundamental conditions है, that will constitute the definition of the function. Okay, since you are already acquainted with those basics, I'll move ahead. तो अब हमारे पास A क्रॉस B में 12 एलिमेंट्स हैं. इन 12 एलिमेंट्स में से अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट्स को उठाता हूँ, so either it will be present in a set or absence in that set. So it's basically set of these sets of ordered pair, okay, which is relation. So maybe one of the relation will be just A, 1. Other relation can be A, 1, A, 2, A, 3. Right? So we can basically decode it. So I can tell A, 1 is present and rest all is absent. This is the coding. For R2, A, 1 is present, A, 2 is present, A, 3 is present, rest all is absent. Okay. So basically how many strings of present and absent for 12 objects can be done? It's very easy because for every object A, 1 and A, 2 we have 2 choice. So total we have 2 into 2 into 2, 12 times. Hence total number of relations operating from A to B is 12. 2 to the power. Hence total number of relation operating from A to B is 2 raised to the power 12. Of course this also constitute functions plus something extra which is not relation. Okay. So I can clearly see number of functions will definitely be less than 2 to the power 12. So in the second case, let's find how many functions are there. So again we have A, B, C, D, 4 elements, 1, 2, 3, 3 elements. Now for functions, A must go exactly to one element, either A, 1 or 2 or 3. So for A, how many choices are there?
We have 3 choice. What about b? B is also free to go back to 1, right? So maybe a, b, c, d, all of them can go to 1, so that's also a valid function. So b is also having 3 choice. What about c? C is also having 3 choice, and d is having 3 choice. So in total we have 3 to the power 4 choice. So this is total number of functions operating from set A to B, right? Now some of you might question like this: why not I'm going other way? Why not, let's say if we have 1 2 3 and a, b, c, d, why not I'm counting other way? Let's say if I, instead of looking from a perspective, अगर मैं आउटपुट सेट के परस्पेक्टिव से देखूँ, सो 1 के पास कितना चॉइस है? 1 2 3 4 चॉइस, राइट? सो 1 will have 4 choice, 2 will have 4 choice, and 3 will have 4 choice. So why not answer is 4 to the power 3. When we multiply, of course, be sure like these choices are independent. Okay, so independently मैं 1 को किसी के साथ भेज सकता हूँ, 2 को भी किसी के साथ, और 3 को भी किसी के साथ. So for every choice we have 4 choice for 2, and again for every choice of 1 and 2 we have 4 choice of 3. इसीलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो यहाँ से 4 क्यों नहीं हुआ, 3 का पावर 4 क्यों नहीं हुआ? ओके, तो इट्स वेरी सिंपल. सपोज देयर इज वन केस व्हेन 1 is going to a b c d. Okay, let's say 1 is going to a, 2 is also going to a, and 3 is also going to a. तो इस केस में तो ये फंक्शन बनेगा ही नहीं, क्योंकि आवर फंक्शन शुड बी डिफाइंड फ्रॉम a to b. Okay, so when I am defining from a to b, and input a is having 3 output, 1 2 3. So in that case it is violating definition of function. Okay, of course there is other violation as well. A b c d, we have 1 2 3. So since I want to define function from a to b, if I think from the output set perspective, let's say 1 is going to a, 2 is going to b, and 3 is going to c. So in this case still is not a function. Can you guess why? Yes, क्योंकि d का कोई partner ही नहीं मिला. So in the input set not every member is exhausted. Okay, but if the question would have been, let's say find the number of functions from b to a, then now the correct answer will be 4 ka power 3, right? And incorrect will be 3 ka power 4. So I hope the basic concept is clear, and you can clearly see like 2 ka power 12 equals number of functions, which is 4 ka power 3 plus something extra. So these extra number of relations are those relations which are not functions. Okay, so function is a subset of relations. So if you have a relation and the 2 set or more set, of course, then function is basically a subset of that. Clear? Okay, fine. Now let's move to the interesting sum, which is part C. In part C, we need to find the total number of 1 function. So 1 function means exactly one element will be mapped to 1. So let's say a b c, a is going to 1, b is going to 2, and c is going to 3. So in this case they will be left. So here it's not possible. So number of 1 function is 0. Why? Because if exactly one guy in set A will have one partner in set B, तो एक को तो अकेला रहना होगा बेचारे को, और आप अकेला जैसे ही रह गए, so it might be a relation but not a function. हाँ, suppose if the question would have been A B C D and then 1 2 3 4 5 6, then of course there is possibilities for one function. Suppose A 1 के पास गया, B 3 के पास गया, C 2 के पास गया, and D is going to 4. So even if 5 and 6 is left, still it's a function operating from set A to set B. So it's very important, like whether the function is operating from A to B or B to A. If it is B to A, because of the above reason, number of 1 function is still 0. ठीक है, 1 function means एक तीर से एक निशाना. आप मल्टीपल तीर से, वो बाहुबली वाला था ना, जो 2 तीर से एक निशाना, आप वो नहीं लगा सकते हो. ठीक है, फिर उसको बोलेंगे many one, means many inputs 1 output. अब इस केस में 1 फंक्शन क्या होगा? सो फॉर ए बी सी डी वी कैन सेलेक्ट एनी 4 ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट बी एंड वी कैन मैप देम. सपोज हमने 1 2 3 एंड 4 सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो जैसे ही मैंने 1 2 3 4 सेलेक्ट किया, तो अब 1 2 3 4 में कितने वेज से हम कनेक्ट कर सकते हैं इस तीर से ए बी सी डी से. सो देयर इटसेल्फ इज 4 फैक्टोरियल वेज, राइट? क्योंकि ऐसा हो सकता है ए, आई विल ट्राई टू डू इन द सेम डायग्राम.
ऐसा हो सकता है A4 के पास गया, B3 के पास गया, C1 के पास गया, D2 के पास गया, और A2 के पास गया, B1 के पास गया, C4 के पास गया, D3 के पास गया। तो जब मैंने 4 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर आपस में भी वो इंटरनली डांस कर सकते हैं, ठीक है, वो अरेंज कर सकते हैं। यू कैन इमेजिन लाइक दिस ABCD। इफ़ आई हैव सेलेक्टेड लेट्स से 1 2 3 4 टू क्रिएट वन फंक्शन, तो 1 2 3 4 यहाँ डाल सकता हूँ, या फिर 1 को ऐसे छोड़ा 2 4 3 डाला, या फिर 1 3 को छोड़ा फिर 2 4 डाला, 1 3 4 डाला। तो इसका पूरा परमिटेशंस आ जाएगा, पूरा अरेंजमेंट आ जाएगा। सो करस्पॉन्डिंग टू सेलेक्शन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट विल हैव अगेन 4 फैक्टोरियल वेज ऑफ इंटरनली अरेंजमेंट्स। तो नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या होगा, 6 में से कोई भी 4 को आई सेलेक्ट, एंड वंस आई हैव सेलेक्टेड एनी 4 मेंबर दे कैन अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज। So this is the answer for this problem, right? In the same problem, if I ask you how many one function is there, so that's very easy, because out of total I'll take away 6c4 into 4 factorial. तो टोटल कितना है, A के पास कितना चॉइस है, 6 चॉइस, so total will get 6 का पावर 4 minus 6c4 into 4 factorial. अब 6c4 into 4 factorial को 6p4 भी बोलते हैं, 6 परमुटेशन 4। एनीवे दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, तो वो आंसर हो जाएगा। चलो लेट्स ट्राई टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेज नाउ वी वांट, so one and many one is done. Now we want number of onto functions. Now as you already know, onto function is also known as surjective function. Okay, this is just a synonymous name, and into function is known as just into function, ठीक है। और एक स्पेशल है 1 1 एंड ऑन टू। इफ अ फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे भी देयर इज लॉजिक, इसको हम सर्जेक्टिव क्यों बोलते हैं ऑन टू को। यूजुअली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जे एडवांस विल यूज दिस वर्ड इंस्टेड ऑफ ऑन टू, दे माइट यूज द वर्ड सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव। 1 1 इज नोन एज इंजेक्टिव। अब याद करने का आसान से तरीका है इंजेक्शन, ठीक है। जब आप इंजेक्शन लेते हो क्या होता है, एक जगह पे चुभता है, सो एट वन पॉइंट यू आर बीइंग इंजेक्टेड एट इन वन सेल, आइडियली ऑफ कोर्स, ठीक है। तो दैट इज 1 1, मतलब एक जगह पे एक सुई मिला। ऑन टू फंक्शंस को सब्जेक्टिव क्यों कहते हैं, यूजुअली इट्स कमिंग फ्रॉम सरनेम। सपोज किसी का सरनेम है अल्फा कुमार, ओके, सो अल्फा इज बेसिकली ऑन टू कुमार, ठीक है ना, उस पर ऊपर है। सो फॉर एनी फंक्शंस वी नो देयर इज समथिंग कॉल्ड कोडोमेन एंड समथिंग कॉल्ड रेंज। तो रेंज क्या होगा, रेंज ऑलवेज इसका सबसेट होता है कोडोमेन का, ठीक है। तो व्हेन रेंज विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू कोडोमेन वी कॉल द फंक्शन इज ऑन टू, ओके। और सर्जेक्टिव वर्ड इज कमिंग फ्रॉम योर सरनेम मीन्स समथिंग विच इज ओवर योर नेम, ओके। सो सर्जेक्टिव फंक्शन मीन्स रेंज इज ओवर द कोडोमेन, मतलब उसको पूरा कवर किए हुए है, ठीक है। और इनटू क्या होगा, मतलब ऑन टू, दिस इज ऑन टू दैट और ओवर दैट। So I hope it is clear. So you can remember surjective idea from your surname. Into function क्या, inside. So this will be the into function if range is subset of codomain. अच्छा, कोडोमेन, व्हाट एग्जैक्टली कोडोमेन इज, कोडोमेन कुछ नहीं, जब आप फंक्शन को स्पेसिफाई करते हो तो सेट बी में, आउटपुट सेट में जितना भी एलिमेंट है उसको कोडोमेन बोलते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट मैप कर जाए इनपुट सेट से, ठीक है। तो जो बच गया वो बच गया। सो बेसिकली कोडोमेन आई ऑलवेज टेल इट्स अ ड्रीम, ओके। रियलिटी इज व्हाट यू अचीव बाय ऑपरेटिंग अ फंक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोडोमेन था 1 2 3 4 5 6, बट रेंज क्या फंक्शन का 1 2 3 4 इन केस ऑफ वन फंक्शन, ठीक है। अगर मान लो ये मेनी वन हो जाता है, ABCD सब 1 के पास चले गया, ठीक है, ऑल ऑफ देम इज गोइंग टू 1, सपोज A इज गोइंग टू 1 B C D, अभी भी कोडोमेन तो चेंज नहीं हुआ बिकॉज कोडोमेन विल बी स्पेसिफाइड वंस द मशीन विल बी क्रिएटेड। जैसे ही आपने बाइक खरीदी, सो कोडोमेन आपको पता है, जो स्पीडोमीटर कैन गो मैक्सिमम टू 250 किलोमीटर पर आवर, बट इन योर लाइफ टाइम ऑफ कोर्स यू विल नॉट ऑपरेट दिस एट 250, ओके। तो आप लाइफ टाइम में उसको 120 130 150 तक मैक्सिमम ऑपरेट करते हो। तो जो रेंज आप, मतलब जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो मैक्सिमम जो आप यूज़ कर रहे हो रिसोर्सेज का, उसको बोलते हैं रेंज। और जो रिसोर्सेज आपको दिया गया है बाय द सिस्टम कैलिब्रेशन, दैट इज नोन एज कोडोमेन। आई होप इट्स क्लियर। सो कोडोमेन इज ड्रीम, रेंज इज रियलिटी, and you know reality will always be a subset of the dream, or it should be at least, okay. And when dream meets reality we call the function is on to, और अगर आपका reality dream के सबसेट में है तो उसको into बोलेंगे, वेरी वेरी सिंपल। तो ऑन टू हो गया, रेंज और कोडोमेन दोनों मैच कर गया, रेंज इक्वल्स कोडोमेन एंड इनटू फंक्शन इज when range is a subset of codomain, ठीक है। So having understood the meaning of
ऑन टू एंड इन टू। चलो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो वी हैव ABCD एंड 1 2 3 सेट इट टू बी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब इस प्रॉब्लम को मैं इक्विवेलेंटली ऐसे भी समझ सकता हूँ। सपोज आई हैव 4 डिस्टिंक्ट बॉल्स B1 B2 B3 B4। सो फॉर द सेक ऑफ डिस्टिंक्टनेस आप इसको अलग अलग कलर का भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, लाइक सो वे टू विजुअलाइज। एंड वी हैव 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस B1 B2 B3। तो ये दोनों क्वेश्चन इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि सपोज अब हमको इस 4 बॉल को इस 3 बॉक्स में डालना है इन सच अ फैशन सच दैट नन ऑफ द बॉक्स इज एम्प्टी। क्योंकि जैसे एम्प्टी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो बॉल्स जाएगा। इट मीन्स समवेयर दिस बॉल B1 B2 B3 B4 is mapping to ABCD, okay, and box 1 box 2 box 3 is mapping to 1 2 3। तो ये दोनों को ऐसे भी सैमुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज वन ऑन टू फंक्शन इज A is going to 1 B is going to 1 C is going to 2 and D is going to 3। तो इसके करस्पॉन्डिंग बॉल्स वाले क्या बन रहे हैं सिचुएशंस? फर्स्ट बॉल और सेकेंड बॉल, सपोज इसको मैं फर्स्ट बॉल सेकेंड थर्ड और फोर्थ बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट 2 बॉल इज गोइंग टू बॉक्स 1, सेकेंड बॉल इज गोइंग टू बॉक्स, third ball is going to box 2 and fourth box is going to box 3। So corresponding to this ball and box situation there exists a correspondence of this function। तो आप चाहे इसको काउंट करो इसको काउंट करो, फंडामेंटली ये सेम प्रॉब्लम है। ओके चलो मैं ये काउंट करता हूँ। लेट्स काउंट बॉल्स एंड बॉक्स वाला, क्योंकि ये ईजियर है विजुअलाइजेशन के लिए। तो अपने पास हाउ मेनी बॉल्स आर देयर? 4 बॉल्स एंड वी हैव टू कीप इन 3 बॉक्सेस। एम्प्टी नहीं रखना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो एक बॉक्स में, कोई भी एक बॉक्स में अगर मैं 2 बॉल रख दूँ तो नेक्स्ट 2 बॉक्स में एक और एक ही रखना हो, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटीज है? अगर फर्स्ट बॉक्स में मैं 3 बॉल रख दूँ तो नेक्स्ट बॉक्स में एक किसी में रखेंगे 4 के लिए और एक को 0 ना होगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। इट मीन्स 1 बॉल विल रिमेन एम्प्टी। So minimum I have to keep 1 1 1 and in any one of the box 1 extra ball। So the only possibilities of distribution of balls is 2 balls, 1 ball and 1 ball। अब कौन सा 2 बॉल इस बॉक्स में जाएगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ऑल द 4 बॉल्स आर डिस्टिंक्ट, सो इट माइट हैपन लाइक B1 B2 इज इन फर्स्ट एंड देन B3 B4 और B1 B2 इज इन फर्स्ट एंड देन B4 B3 और इट माइट हैपन लाइक B1 B3 एंड B2 B4। तो ऐसे करके वी कैन काउंट दिस, ओके। अब ये काउंटिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा here, although it's not impossible क्योंकि number of cases छोटे हैं। but what will happen, let's say if you have 5 balls and 3 boxes, तो फिर case making will be more। तो ऐसे तो of course no one will count। तो यहाँ पे smartness क्या है? अब देखो 4 balls को we have to give to 3 persons or 3 boxes, okay, such that one of them should receive 2, others should receive 1 and others should receive again 1। तो सबसे पहले 4 बॉल में से किसी 2 को सेलेक्ट करते हैं, 4C2, ठीक है। आई एम सेलेक्टिंग 4C2। इट्स बेटर टू फर्स्ट मेक अ पैकेट। लेट्स से आई वांट टू मेक अ पैकेट ऑफ 2 बॉल 1 बॉल एंड 1 बॉल। तो कैसे पैकेट बनेगा? 4 में से कोई भी 2 बॉल को सेलेक्ट करते हैं, फिर जो रिमेनिंग 2 बॉल है उसमें से कोई एक को सेलेक्ट करते हैं एंड रिमेनिंग 1 में से एक को सेलेक्ट करते हैं। बट व्हेन आई हैव डन दिस देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल मिस्टेक दैट यू कैन डू। द मिस्टेक इज ऑल्सो ब्यूटीफुल समटाइम्स। क्योंकि देखो ये क्या हुआ, when I have done 4 में से 2, maybe I have selected B1 B2 and then B3 and B4 or first I have selected B1 B2 and then 2C1 में से I have selected B4 and B3। okay, so now we can clearly see with respect to division into packets, अभी वो पैकेट के को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। I just need to make a packet containing 3 items। so whether it is B1 B2 B3 B4 or B1 B2 B4 B3, these packets are same। okay, of course the order of packet is different, ठीक है, because if you arrange them in the line। बट अभी मेरे पास पैकेट क्या बना पार्सल भेजने के लिए? एक पैकेट में B1 B2 है, दूसरे में B3 या B4 है, चाहे आप किसी ऑर्डर में रखो। इवन इफ आई टेक B3 हेयर एंड B1 B2 हेयर एंड B4, ठीक है। बट अमेजन वाले को तो हमको यही 3 पैकेट देना होगा। हाँ, सो ऑल दीज आर सेम। हाउ पैकेट्स कैन बी डिस्टिंक्ट? व्हेन वी हैव डिफरेंट कंटेंट इन द पैकेट। लेट्स से B1 B3 and B2 and B4, so this is different packet from this packet, right? Of course we are counting this in 4C2 2C1 1 1, these 2 are counted, right? तो इसको कैसे हम अवॉइड करेंगे इस काउंटिंग को? इस काउंटिंग अवॉइड करने का एक ही तरीका है, क्योंकि B3 और B4
और B4 और B3 जो सेम साइज वाले पैकेट्स हैं उससे डिवाइड करना होगा. So that divide by 2 factorial. This we have divided because even they can externally arrange to produce the extra items. We are not dividing by the internal arrangement of B1 B2. Why? क्योंकि मैं select ही 2 ऑब्जेक्ट को किया. I have not arranged. It's not like 4 P2. तो whether I am selecting B1 B2 और B2 B1 is same thing. It's already counted 1 से. तो यहाँ से क्या होगा 2 factorial 2 and 2C1 is also 2. ये कैंसिल हो गया. 4C2 अपने पास 6 आंसर है. ठीक है. बट सो दिस इज 6 इज द नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट पैकेट. जैसे B1 B2 B3 B4 और B1 B4 B2 B3. क्योंकि 4 में से कोई भी 2 से हम पैकेट निकाल सकते हैं. ओके. यू कैन ऑल्सो थिंक 4C2 जो बाकी बचा वो एक पैकेट में ऑटोमेटिकली चली जाएगा. लेकिन नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दोज पैकेट टू दिस 3 पर्सन. तो आप पैकेट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3 पर्सन? सिंपल है. एक बार पैकेट आ गया. अब यहाँ पे 3 राम श्याम घनश्याम इज देयर. राम श्याम घनश्याम और 3 बॉक्सेस B1 B2 B3. ठीक है. तो अब ये 3 डिस्टिंक्ट पैकेट को हम 3 फैक्टोरियल में डाल सकते हैं क्योंकि आइदर फर्स्ट पैकेट विल गो टू राम श्याम घनश्याम और फर्स्ट विल गो टू श्याम and second will go to ram or this. So that can be done in 3 factorial. The answer is 4C2 into 3 factorial which is 36. I hope you really understood the genetics of the problem. That's very important, which I call often in my class physics of maths. Now there is a very cool way of solving this with method 2, because making these packets will not be very nice when the number of objects in, let's say, set A is 20 and the number of objects in set B is, let's say, 10. तो फिर ये पैकेट से आपको बहुत सारे केस बनाने होंगे. सो इज देयर अ जनरल वे ऑफ डूइंग दिस? ऑफ कोर्स यस. और उस वे को हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन करते हैं. सो लेट मी डू दिस विद अदर वे. प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन विच इज वेरी पावरफुल टेक्निक फॉर जेई मैथ्स. ऑल्दो अगर आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन से भी हर एक क्वेश्चन लास्ट 20 ईयर्स के यू कैन सॉल्व वेदर इज जेई मेन्स और एडवांस्ड. ओके. सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू. Okay, so let's see what exactly principle of inclusion exclusion is. तो यहाँ पे let's discuss the physics first. So again we have set A and set B. Set A में how many elements are there? 4 and set B is 3. I want to repeat the same questions with other perspective. अब A के पास how many options are there? 4 options. 1 2 3. Sorry. So A के पास how many options are there? We have 3 options. So 3 B to the power 3, C will have 3 options, they will have 3 options. The total is 3 to the power 4 options. Now the problem is in this 3 to the power 4 options we have different varieties of functions available. Of course all these are functions. इसमें ऐसा ही function है जो exactly which is mapped to one element, right? This also contains function which is mapped to. So in this 3 to the power 4 we have different varieties of functions available. Let's see what are the varieties which is available here. Okay, so it contains function where all these 4 elements is just mapped to single element, right? Let's say 1 and 2 3 is empty. It also contains those functions which is mapped to 2 of them and 1 is empty. It also contains function which is mapped to all 3 of them. It doesn't matter how many goes to, but all 3 is exhausted. Then it contains functions which is mapped to none of them, like empty. Yes. It's not possible because then that will not be a function. So in 3 to the power 4 we have 3 varieties of answer, right? Okay. तो अब देखो जब 3 to the power 4 when we have taken, it already counts this many of functions and this many and this many. Okay. So if I have to count number of onto functions जहाँ पे ये तीनों मैप्ड हो तो I have to subtract the first varieties and the second varieties. So let's try to do that. ठीक है. So 3 to the power 4 minus, let's try to take away all the functions of first variety जहाँ पे वो 1 element से mapped है. So how many such answers will be possible? अब देखो या तो ये 1 element से map होंगे और all of them will go to 2 or all of them will go to 3. So how many such functions are possible? Just 3 of them. Minus, now I'll take away all the functions which is mapped to 3 of them, right? So if minus will take away all the functions which is mapped to 2 of them. So let's say we have 1 2 3 4 and this is mapped to exactly 1 and 2 and 3 is left. Now how many ways are there? So it can go to 1 can go to
1, 2 can go to 1, 3, 4 can go to 2. Or it might happen like 1, 2, 3, 4. We have 1, 2, 3. So 3 is again left because we are trying to map 1, 2 exactly to 2 element. Okay. So 1, 2, 3 is going to 1 and 4 is going to 2. Or it might happen like 1, 2 is going to 2 and 3, 4. So there is so many ways. Now counting this is not so nice, right? So it's not so nice. Not so nice. But if somehow you can count this total number of functions, then the problem is done. So we have total 81 minus 3 minus number of functions which is mapped exactly to 2 element. Okay. If you see this problem, it is basically another a smaller problem. Why? Because now the problem is fundamentally from 1, 2, 3, 4, I want to map exactly 2 elements. So it's basically counting number of onto functions for a new problem, where set A contains 4 objects and set B contains just 2 objects. So for this we have to count the number of onto functions. Okay, number of functions where every element is mapped. So if I look from this perspective, of course it's not very difficult to do it over here. Why? Because how many functions are there? In total, for this case, number of functions, again 1 will have 2 choice, 2 will have 2 choice, 3 will have 2 choice, 4 will have 2 choice, 2 to the power 4. Minus how many functions will be there which is into, and that's really easy because there will be only 2 functions which is into over here. Why? Because either all of them will go to 1 or all of them will go to 2. There is no other possibilities, right? So if none of them is going to either 1 or 2, then of course, so either all of them will go to 1 or all of them will go to 2. अब जो बच जाएगा उसको on 2 होना ही होगा, ठीक है? So 2 to the power 4 minus 2, which is 16 minus 2, 40. Okay, so if I put 14 here, that is exactly number of functions when this is going to 1 and 2, but it might have gone to 2 and 3 and 1 and 3. So by symmetricity, how many cases will be there? 3 such case. Okay, so not so nice function is 42 in numbers. So in total we have 81 minus 45, which is 36. So I hope you have enjoyed this method. But what we have done in this problem is we have reduced the problem to a simpler problem and then we have solved. So fundamentally I have not avoided the like number of onto count, but the scalar problem was reduced. Although this is again a fanciful method, but to generalize this, you have to reduce this in many steps. Just to give you information, this process is known as process of step reduction or process of recursion formulas. So we are creating an ambience where the problem statement boils down to a simpler problem statement of same nature, and from there it goes further, and you know how to eat an apple if it is comfortable. Okay, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एक और मेथड से, अभी भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है जनरलाइजेशन का. So can we kill the problem in one line kind of a structure? Of course we can do it, and here we go with a very interesting solution of principle of inclusion and exclusion. तो ये principle of inclusion and exclusion क्या, ये quite simple है. If you have to set A and B, okay, so you know if number of element in A union B will be number of element in A plus number of element in B. So when I'm counting all element in A and B, I have done a mistake by counting this leaf twice, so I have to compensate for the mistake. A union B. If you are doing for 3 elements, A union B union C, we know it will be number of element in A plus B plus C minus number of elements in A intersection B and plus number of element in A intersection B intersection C. So its set representation will also be cool. We have A, B, C, and clearly we can see we have A and B region coming twice, B, C coming twice, and C and A coming twice, and this is small चिंटू region. ये 3 बार काउंट हो गया, ठीक है. तो जब मैं ये ऐड कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये कॉमन रीजन बिटवीन देम इज काउंटेड ट्वाइस. So to compensate that I am taking away, but when I am taking away all those common regions, the mid region, this is a smaller region,
is being taken away in this process. तब तो हुआ ही नहीं. So we have again, because that becomes empty vacuum. So we have to compensate for the loss, and hence we could get this general formula for 3 set. You can generalize this for even n set. Find 3 set in order to understand this. So set A I am defining. Set A I am defining when, let's say, n1, which represents when 1 is empty. 1 is empty. Okay, because there will be functions, many functions, where 1 is empty and everything is mapped to n3. I am defining the other set B as n2 when 2 is empty. So the basis of definition of a set is very important, and I am defining n3 when 3 is empty. Now why I am defining so? Because the logic is we wanted the count for all such functions which completely exhaust this possibilities of 1, 2, 3. So what is the negation of that statement? You always define set which is negation, उल्टा of the statement. तो मुझे वो फंक्शन का काउंट फाइंड करना है जिसमें तीनों का तीनों एग्जॉस्ट हो जाए और मैप हो जाए. तो हम ऐसा काउंट सेट को डिफाइन करेंगे जिसमें लेट से 1 मैप नहीं हो और 2 मैप नहीं हो और 3 मैप नहीं हो, फिर 1 2 मैप नहीं हो, 2 3 मैप नहीं हो, 1 2 3 मैप नहीं हो. Okay, so all kind, then we'll subtract from this. So basically what we want is n1 union n2 union n3. What is the physical significance of this under this definition? Remember the definition. Nx means when x is empty. So n1 means 1 is empty, n2 means 2 is empty, and n3 is the number of counts of function where 3 is empty, and that is visualized there in the segmentation. तो n1 union n2 into n3 का क्या मतलब है? At least one among 1 2 3 is empty. Okay, 1 2 3 is empty. कम से कम एक तो empty है, दो भी empty हो सकता है, तीन भी empty हो सकता है, because this definition. So what I am interested is this white region. Okay, because all of total, if I'll take away n1 union n2 union n3, I'm done. Clear? So now what is the total number of functions? Of course I'm counting functions. So we have 1 2 3 4 objects. For everyone we have 3 choice, so 3 power 4 minus, now straight away I'll find n1 n2 n3. I'm not using n of n because this of course represents number of counts by my like symbols. So this is n1 plus n2 plus n3 minus n1 n2 minus n2 n3 minus, so you can write this as plus n1 n3, 3 possibilities, plus n1 intersection n2 intersection n3. So what is n1? n1 is all those functions where 1 is empty. 1 is empty means nothing is going to 1, right? So how to calculate this? We can just leave 1. What about others, 2 and 3? We don't care, and that's the beauty of this principle. Okay, when I tell 1 is empty, I'm just considering about 1. I don't care about 2 and 3. Okay, whether it is being empty or not, there is no consideration here because that is automatically adjusted in the further terms. तो अगर 1 empty है तो सिर्फ 1 को empty देखना है, ठीक है? तो फिर A के पास कितना चॉइस है? 2 चॉइस, B के पास 2 चॉइस, C के पास 2 चॉइस और D के पास 2 चॉइस. So n1 will have 2 का power 4 members, n2 will have again 2 का power 4, and n3 by symmetricity 2 का power 4. So now we have 3 into 2 ka power 4. This minus. Now next is plus because minus of this entire thing is there. Now what will happen when we have n1 intersection n2? It means 1 and 2 both is empty. So again let's come. Now I don't want to touch 1 and 3. So you don't have much options here. So everything has to go to 3, right? So we have only one choice. So n1 intersection n2 will have one choice, again one choice, again one choice. This is not minus, it's plus because minus is already prefixed there. Okay. Now minus n1 intersection n2 intersection n3. What does it mean? When 1 2 3 all is empty, and that is not possible because if all of them is empty means nothing is connected with that, so that's not a definition of function. So ये वाला 0 हो जाएगा. So finally what answer we got? We got 81 minus 48 plus 3, which gives 84 minus 48, that goes to 36. So you can clearly see this is the same answer that we got. Okay.
Now some of you might be wondering like what exactly happened there. तो वो काफ़ी आसान था क्योंकि जब मैं 3 का पावर 4 को काउंट कर रहा हूँ विच इज़ 81 आंसर्स. Okay, it's counting all the possibilities. Now when I'm making at least one is empty, this is not like exactly one empty, and one was when one is empty. So we don't care about 2 and 3, and that's the beauty here. Okay, let's see like this: 1 2 3 4. Just a small explanation. A B C D. When I told like A and B is going to 2 and C is going to C, D is going to 3. In that case, 1 is empty, right? It also counts when CD is going to 2 and AB is going to. Okay, so let's try to understand the physics behind what exactly happened and why this alternate addition and subtraction is coming physics wise. Okay, so it's not that difficult because let's consider a case when 1 is empty. When I tell 1 is empty, it means only 1 is empty, right? When I tell when 1 is empty, it means at least 1 is empty. I don't care about 2 and 3, it may be empty or not. So here suppose in the case when I am writing 2 to the power 4, what is happening is A is I have given 2 options, right? Either to go to 2 or 3. B I have given 2 options, C I have given 2 options, D I have given 2. But it might happen all of them I have gone to 2. So in N1 I have also counted the case when 1 and 3 became empty, right? 1 and 3 became empty, rest is going to 2. But this case is counted twice. Why? Because suppose now in 2 to the power 4 3 is empty. So and in this case all of them is going to 1. तो फिर क्या होगा? Now some of you might have confusion like this is fine, you got the answer, लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि एग्जैक्टली माइनस प्लस कर क्या रहा है फिजिकली, ये क्या कर रहा है. तो देखो एक्चुअली सपोज वी हैव ए बी सी डी एंड 1 2 3. जब आप बोल रहे हो एटलीस्ट 1 इज एम्प्टी विच इज़ बेसिकली N1, क्योंकि 2 और 3 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं. तो सपोज ऐसा क्या हुआ, ए बी सी डी चारों का चारों 2 के पास चले गया. तो N1 वाले केस में ऐसा भी केस काउंट हो रहा है जिसमें 1 तो एम्प्टी था ही और 3 भी एम्प्टी हो गया because we are counting 2 to the power 4 wala case. But more interestingly, when you are adding n1 plus n2 plus n3, अब उस केस में this is over counted because one function we are getting when ABCD is going to 2 and 1 3 is empty. Now you see there will be other situation of ABCD 1 2 3 when this time 3 is empty, that you have counted for n3, लेकिन remaining all option is going to 1 now. Sorry, remaining all option is going to 2 ABCD. तो 3 एम्प्टी है और फिर भी ये चारों 2 के पास चले गया, तो फिर 1 और 3 एम्प्टी छूट गया. इसका मतलब ये देखो ये एग्जैक्टली 2 बार काउंट हो चुका है ये फंक्शन. सो व्हेन आई एम एडिंग n1 प्लस n2 प्लस n3 आई एम डूइंग फॉल्स काउंटिंग फॉर 2 ऑब्जेक्ट्स टू बी एम्प्टी ट्वाइस. इसका मतलब ये वाला जो लीफ है ओके 1 एम्प्टी वाला, दिस इज ऑल्सो काउंटिंग 1 एम्प्टी एंड 3 एम्प्टी, 1 एम्प्टी एंड 3 एम्प्टी वाला. ओके ये वाला और फिर 3 और 1 वाला भी फिर से काउंट हो गया. तो इट मीन्स दिस लीफ इज काउंटेड ट्वाइस. आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है, विद द सेम लॉजिक यू कैन टेल दिस लीफलेट विल ऑल्सो बी काउंटेड ट्वाइस क्योंकि ये फॉल्स काउंटिंग बन रहा है और ये भी ट्वाइस काउंटेड हो जाएगा. सो दैट्स वाई आई हैव टू टेक अवे इन द नेक्स्ट गो. सो इन द नेक्स्ट गो व्हेन वी आई एम टेकिंग अवे यू नो लाइक व्हेन एग्जैक्टली 2 is empty. So maybe 1 2 empty and 3 is left, or 1 3 is empty 2 is left, so that is compensated for the loss. Now this principle of inclusion and exclusion, once you have understood and captured it properly, I can generalize this for a general problem. So let's say we have now 3 members A B C D. Let's say we have 4 members A B C D and now we have 3 members. It's already past JEE advanced question 1 2 3. So how many 1 2 functions are there from A to E?
Now again it's very easy because A will have total 3 choice, B will have 3 choice, C, D and E all will have 3 choice. So total number of function is 3 to the power 5 minus the case when at least one is empty. So let's say if n1 is empty, again in same way I can define n1 when 1 is empty, n2 when 2 is empty, and n3 3 is empty, and I don't want either of them is empty. So first I'll calculate their union from total, I'll subtract this, same idea. So 3 to the power 5 minus when 1 is empty, we'll have 2 to the power 5 choice into 3 choose 1 because anyone can be empty, plus now to make 2 of them. So if 2 of them is empty, A will have 1 choice each, so you don't have a choice. Out of 3 I could have selected any 2 of them, so 3C2 minus when all 3 is empty, so that's not possible. So that will give you the answer as 3 to the power 5, which is 243, minus that is 32 into 3 plus 3, and that gives you answer as 150. So I hope you understood this method. Of course, I'll urge you to try this method using ball and box problem, because this time you have 5 balls and 3 boxes. So the way in which you can first make packet is packet of 211 or packet of 311. ठीक है, अब 211 वाले पैकेट कितने वेज में बनेंगे, तो फिर से 5 में से 2 को आई सेलेक्ट, रिमेनिंग 2 में से 1 या रिमेनिंग 2 में से 1, बट आई हैव टू डिवाइड इट because I could have selected apple orange or orange apple, it's same thing, so divide by 2 factorial. This is the number of ways of making packet. यहाँ से कितने पैकेट बनेंगे, 5 में से 3, अगर रिमेनिंग 3 में से 1, सॉरी रिमेनिंग 2 में से 1, और जो बच गया तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है 1 से 1. फिर अगेन it will be the package is having same content, so that can dance among them, so 2 factorial. So once I have made a packet, in how many ways I can distribute between 3 persons, this entire into 3 factorial plus this entire into 3 factorial, and that if you calculate you will get same as 150. So I hope it is clear. So this was the first session on number of count of function. I'll come with the second session with more interesting and difficult problems in part 2.